whatever running on this server is only accessible by these two computers. So these are some of the rules that you can apply in your firewall. You can see our server is going into panic mode and it crashed. Now what we have to do is we have to send a TCP packet from computer 1 to computer 3. Let's send an obvious message to all of you. Please subscribe. Hello everyone, and in this video we are going to do our next room, which is extending your network. This is the last room of the network fundamental module. So let's jump into it. And as you can see that this is a premium room, and if you want to follow along with me, you're gonna have purchased the subscription to access this room. So let's dive into the first task, which is introduction to port forwarding. Port forwarding is an essential component in connecting applications and services to the internet. Without port forwarding, applications and services such as web servers are only available to devices within the same direct network. Take the network below as an example. Within this network, the server with an IP address of 192.168.1.10 runs a web server on port 80. Only the two other computers on the network will be able to access it. This is known as an intranet. So as you can see that we have a web server running on port 80 with the IP address of 192.168.1.10, and it is connected to an router and the two computers. So whatever running on this server is only accessible by these two computers. तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो जो ये कंप्यूटर हैं जो दो हैं, ओनली ये दो इस राउटर के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दो ही इस वेब सर्वर के अंदर जो 192 जो भी आईपी एड्रेस है, इसके ऊपर जो भी वेबसाइट रन कर रही है, उस वेबसाइट को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दो कंप्यूटर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इस डिसिप्लिन को हम कहेंगे इंट्रानेट, नॉट इंटरनेट, इट्स इंट्रानेट। So let's go further. If the administrator wanted the website to be accessible to public using the internet, they would have to implement port forwarding, like in this diagram below. So जैसे कि अभी आपने देखा, अभी ये दो कंप्यूटर्स जो हैं, only these two computers are able to access this server. But if the administrator wants this server to be accessible to the public, he have to implement the port forwarding. सो दैट आपके जो और लोग हैं इंटरनेट के ऊपर जो और पब्लिक है वो इस चीज़ को एक्सेस कर पाए। विद दिस डायग्राम नेटवर्क 2 will now be able to access the web server running on network 1 using the public IP address of the network 1. It is easy to confuse port forwarding with the behavior of a firewall, a technology we will come on to discuss in this task later. However, at this stage, just understand that port forwarding opens specific ports. Recall how packets work. In comparison, firewalls determine if traffic can travel across these ports, even if these ports are opened by a port forwarding. Port forwarding is configured at the router of a network. So अभी हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं. So what we have previously is that these two computers are the only computers who can access this web server, but the administrator of this intranet that you can see here, the administrator of this intranet implemented the port forwarding so that the other public can access this web server by using the public IP address 82.62.51.70 at port 80. सो जैसे कि आप देख पा रहे हो अब हमारे पास ये एक दूसरा कंप्यूटर है जो सेम इस वेब सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करना चाहता है। ये कैसे हमारा एक्सेसिबल हो पाएगा जब एडमिनिस्ट्रेटर इस राउटर के ऊपर पोर्ट फॉरवर्डिंग को इम्प्लीमेंट करेगा। सो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपको यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो ये ध्यान रखनी है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग इज़ कॉन्फ़िगर्ड एट द राउटर ऑफ द नेटवर्क, दैट्स द मेन पॉइंट। So what is the name of the device that is used to configure port forwarding? That is her router. Now let's hop on to our task 2, which is firewalls 101.
A firewall is a device within a network responsible for determining what traffic is allowed to enter or exit. Think of a firewall as border security for network. An administrator can configure a firewall to permit or deny traffic from entering or exiting a network based on numerous factors such as where the traffic is coming from. That means the firewall checks the traffic that is incoming to your device. Where the traffic going to? That is the outgoing traffic from your device. What पोर्ट इज़ द ट्रैफिक फॉर? जो ट्रैफिक है अगर आपके पास वेब सर्वर चल रहा है तो वो कौन से पोर्ट के थ्रू आ रहा है? वो जैसे मान लीजिए वेब सर्वर जो हमारे पोर्ट 80 के ऊपर चलते हैं, तो वो ट्रैफिक जो होगा वो पोर्ट 80 का होगा। व्हाट प्रोटोकॉल इज़ द ट्रैफिक यूजिंग? कौन सा प्रोटोकॉल है जो ट्रैफिक यूज़ कर रहा है? मान लीजिए आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो यूडीपी यूज़ होगा। अगर आप फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं या कोई ईमेल आप किसी को सेंड कर रहे हैं तो टीसीपी यूज़ होगा। ये क्यों होंगे protocols use UDP and TCP? You can go to our previous video where we have discussed these protocols and how they work and what are the advantages and disadvantages of these two. So if you are interested about learning UDP and TCP, you can go to my previous video where you can learn about these two. And let me show you how a firewall looks like in a Windows system. So if you press Window key and start typing firewall, so this is the first option that you have to click, and in this window you can specify the inbound rules for incoming traffic and outbound rules for outgoing traffics. So these are some of the rules that you can apply in your firewall. So if you want to learn more about this, you can open your firewall configuration and you can check in what's inside these inbound rules and outbound rules. You can learn more by doing this. Firewall perform packet inspection to determine the answers to these questions. Firewalls come in all shapes and sizes, from dedicated pieces of hardware, often found in large networks like businesses, that can handle a magnitude of data, to residential routers, like at your home, or software such as Note. Firewalls can be configured into 2 to 5 categories. Let's go to this link and see what's inside it. So this is a software based firewall. It's an open source software so you can download it and use it. It literally said that protect your network with the world's most powerful open source detection software. So ये एक open source सॉफ्टवेयर है जो कि एज ए फायरवॉल आप यूज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर. We will cover the two primary categories of firewalls in the table below. So we have two categories of firewalls. Let's see what are those. The first one is stateful and the second one is stateless. So what is stateful? This type of firewall uses the entire information from a connection. Rather than inspecting an individual packet, this firewall determines the behavior of a device based upon the entire connection. This firewall type consumes many resources in comparison to stateless firewalls, as the decision making is dynamic. For example, a firewall could allow the first parts of a TCP handshake that would later fail. If a connection from a host is bad, it will block the entire device. So let's go to the stateless one. This firewall type uses a static set of rules to determine whether or not individual packets are acceptable or not. For example, a device sending a bad packet will not necessarily mean that the entire device is then blocked. Whilst these firewalls use much fewer resources than alternatives, they are much dumber. For example, these firewalls are only effective as the rules that are defined within them. If a rule is not exactly matched, it is effectively useless. However, these firewalls are great when receiving large amount of traffic from a set of hosts, such as distributed denial of service attack. Now let's answer some of the questions. What layers of the OSI model do firewall operate at? For this answer, just provide the numbers in ascending order, separated by
ampersand, that is 4 and 5, like this. सो जो हमारी फायरवॉल है वो कौन सी ओएसआई मॉडल की लेयर के ऊपर वर्क करती है? दैट इज 3 एंड 4. What category of firewall inspects the entire connection? That is stateful. What category of firewall inspects individual packets? That is stateless. Let's go to our fun part, that is the practical on firewall that we all are waiting for. So deploy the static side attached to this task. Malicious traffic are marked as the packets in red. The legitimate traffic are the packets marked green. The protocol you need to block is port 80. Configure the firewall to prevent the malicious packets from reaching the web server 203.0.11.10 and 1. तो हमें इस पोर्ट के ऊपर अपनी फायरवॉल को ऐसे कॉन्फ़िगर करना है कि जो मलीशियस पैकेट्स हैं वो हमारे वेब सर्वर पर हिट ना करें। तो जैसे कि आपको पता है जो रेड पैकेट्स हैं वो हमारे मलीशियस पैकेट्स हैं एंड द गुड वंस आर द ग्रीन पैकेट्स। So let's click on the view site button. Let's see how it looks. The website at this IP address is under attack. Quickly add some firewall rules to stop the server from crashing. As we know that the red packets are the malicious packets coming from the attacker's machine. So we have to block these red packets. Now let's start the simulation by clicking on start simulation button. As you can see that this IP address is sending the malicious red packets to our server and that will crash our server in a moment. Let's wait for that. You can see our server is going into panic mode and it crashed. So here what we have to do is the packets are coming from this IP address should be blocked by our firewall which is implemented on our router. Now let's restart the simulation and do what I just said. So this is our source IP address from where the red packets coming from, and this is our web server that we have to keep safe, and this is all are going on port 80. Let's add this rule and you can see the red packets are not going further from our firewall and we got our flag. So this is a very nice example of firewall that we can see here, and like this there is a much more gamified lessons that we are going to come across. So let's copy this flag and paste it here. Now after this very amazing task or practical, we are going to our task 4, which is VPN basics. Let me exit out of this split screen. A virtual private network, or VPN for short, is a technology that allows devices on separate networks to communicate securely by creating a dedicated path between each other over the internet, known as tunnel. Devices connected within the tunnel form their own network that is private. So, what VPN does is it creates a tunnel from where we can secretly access our devices. For example, only devices within the same network, such as within a business, can directly communicate. However, a VPN allows two offices to be connected. Let's take the diagram below where there are three networks. So, network 1 is in gray, and network 2 is in pink, and network 3, which is VPN, is in cyan. So, what is going on this diagram that इंटरनेट है हमारा जिसके साथ हमारे दो राउटर्स जो हैं वो कनेक्ट हैं एंड विद दोज राउटर्स देर आर थ्री pieces or devices which are connected at each end. The devices connected on network 3 are still a part of the network 1 and network 2, but also form together to create a private network, that is network 3, that only devices that are connected via the VPN can communicate over. Let's cover some of the other benefits offered by a VPN in the table below. So let's see what are the benefits of a VPN.
allows network in different geographical location to be connected. For example, a business with multiple offices will find VPNs beneficial as it means that resources from servers infrastructure can be accessed from another office. Offers privacy. VPN technology uses encryption to protect data. This means that it can only be understood between the devices it was being sent from and is destined for, meaning that data is not vulnerable to sniffing. This encryption is useful in places where public Wi Fi, where no encryption is provided by the network. You can use a VPN to protect your traffic from being viewed by other people. Offers anonymity. Journalists and activists depends upon VPNs to safely report a global issue in countries where freedom of speech is controlled. Usually your traffic can be viewed by your ISP, that is internet service provider, and other intermediaries and therefore tracked. The level of anonymity a VPN provides is only as much as how other devices on the network respect privacy. For example, a VPN that logs all your data history is essentially the same as not using a VPN in this regard. तो अब ज़रा इनकी डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं कि जो हमारा VPN है वो हमें अलाउ करता है कि अगर हमारी मान लीजिए एक ब्रांच अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे है और एक अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे है, तो आप उन दोनों को इजीली एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे से थ्रू ए टनल। सेकंड वन इज़ ऑफर्स प्राइवेसी। अब फॉर एन एग्जांपल जो हमारा पब्लिक वाईफाईज होते हैं जो कि ओपन होते हैं, हमें नहीं पता उन्हें कौन ऑपरेट कर रहा है। जितना भी हमारा ट्रैफिक जो है उन राउटर्स के थ्रू या वाईफाईज के थ्रू जाता है, वो सारा का सारा जो डेटा है वो उस वाईफाई का जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो देख सकता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह पे वीपीएन यूज़ करते हैं तो वो डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। वीपीएन का मतलब है वो उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और जो इनक्रिप्टेड डेटा है उसको डिक्रिप्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ऑफर्स अनोनिमिटी। अगर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो मान लीजिए मैंने अपने फ़ोन से वीपीएन को कनेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस मैंने वीपीएन के कनेक्ट होने से पहले की है अपने फ़ोन से, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मेरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो देख सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने वीपीएन के साथ कनेक्ट किया उसके बाद का जितना भी डेटा होगा वो मेरा आईएसपी, मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं देख पाएगा क्योंकि वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वीपीएन। TryHackMe uses a VPN to connect you to our vulnerable machines without making them directly accessible on the internet. This means that you can securely interact with our machines that we are going to experience in upcoming chapters, in which we can connect the TryHackMe applications using OpenVPN and run them locally in our Kali Linux machine to hack them. So we have to wait for that. Services providers such as ISPs don't think you are attacking another machine on the internet, which could be against the terms of service. The VPN provides security to TryHackMe as vulnerable machines are not accessible using the internet. तो ये जो वल्नरेबल मशीन्स हैं हमारी ट्राईहैकमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सिर्फ उस वीपीएन के थ्रू ही एक्सेसिबल होगी जो ट्राईहैकमी हमें एक वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल प्रोवाइड करता है, जिस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को आप ओपन वीपीएन के थ्रू ओपन करते हैं। ओनली देन यू कैन एक्सेस द machines that are vulnerable and that are designed for our hacking purposes. So that are only accessible to those people who have that VPN configuration file. VPN technology has improved over the years. Let's explore some exciting VPN technologies below. So these are the three technologies of VPN. First one is PPP. This technology is used by PPTP, explained below. That is this.
to allow for authentication and provide encryption of data. VPNs work by using a private key and public certificate, similar to SSH, that is secure shell. A private key and certificate must match for you to connect. This technology is not capable of leaving a network by itself, non routable. So, what is PPTP? The point to point tunneling protocol is the technology that allows the data from triple P to travel and leave a network. PPTP is very easy to set up and is supported by most devices. It is, however, weakly encrypted in comparison to alternatives. IPsec, that is Internet Protocol Security, encrypts data using the exciting Internet Protocol framework. Internet Protocol Security is difficult to set up in comparison to alternatives. However, if successful, it boasts some encryption and is also supported on many devices. अब देखते हैं कि क्या क्या है। तो मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट है ट्रिपल पी। जो हमारा ट्रिपल पी टेक्नोलॉजी है वो पीपीटीपी जो कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है वो यूज़ करता है। अब ट्रिपल पी जो होता है वो नॉन राउटेबल होता है, मतलब वो नेटवर्क को लीव नहीं करता, वो एक नेटवर्क के अंदर ही रहता है। लेकिन जो पीपीटीपी है वो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं नेटवर्क को लीव करने की, मतलब बाहर का नेटवर्क को एक्सेस करने का। लेकिन इसके अंदर जो है इनक्रिप्शन कम है, वीकली इनक्रिप्टेड है ये। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया है आईपीसेक, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ये हमें प्रोवाइड करता है इनक्रिप्शन so that our data will be encrypted if we connect to the VPN, and that will provide us this security. Now let's answer the questions. What VPN technology only encrypts and provides the authentication of data? That is triple P. What VPN technology uses the IP framework? मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क कौन सी VPN टेक्नोलॉजी यूज करती है? दैट इज IPsec. Now let's go to our next task, that is LAN networking devices. What is router? It's a router's job to connect networks and pass data between them. It does this by using routing, hence the name router. Routing is the label given to the process of data traveling across networks. Routing involves creating a path between networks so that this data can be successfully delivered. Routers operate at layer 3 of OSI model. They often feature an interactive interface such as a website or a console that allows an administrator to configure various rules such as port forwarding or firewalling. Routing is useful when devices are connected by many paths, such as in the example below, where the most optimal path is taken. तो ये चीज़ हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी पे कोई भी डेटा भेजना है और उसके बीच में 4 राउटर्स हैं, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे रिलायबल पाथ ही चूज़ करेगा और जो सबसे फास्ट होगा अपने डेटा को ए से बी की तरफ सेंड करने के लिए। राउटर्स आर डेडिकेटेड डिवाइसेस एंड डू नॉट परफॉर्म द सेम फंक्शंस एज स्विचेस। We can see that computers A network is connected to network of computer B by two routers in the middle. The question is what path will be taken. Different protocols will decide what path should be taken, but factors include what path is shortest, what path is the most reliable, which path has the faster medium, copper और fiber, जो कि मैंने अभी आपको बताया। What is a switch? A switch is dedicated networking device responsible for providing a means of connecting to multiple devices. Switches can facilitate many devices from 3 to 63 using Ethernet cables. Switches can operate at layer 2 and layer 3 of OSI model.
However, these are exclusive in the sense that layer 2 switches cannot operate at layer 3. Take for example a layer 2 switch in the diagram below. These switches will forward frames. Remember that the original IP packets are encapsulated within the frames onto the connected devices using their MAC addresses. तो स्विचेस के बारे में भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ओ एस आई मॉडल को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो याद रखने वाली चीज़ क्या है, वो ये है कि जो डिवाइसेस लेयर 2 पर वर्क करते हैं, वो डिवाइसेस लेयर 3 पर वर्क नहीं करते ओ एस आई मॉडल की। These switches are solely responsible for sending frames to the correct device. Now let's move on to layer 3 switches. These switches are most sophisticated than layer 2 as they can perform some of the responsibilities of a router. Namely, these switches will send frames to devices and route packets to other devices using the IP protocol. Let's take a look at the diagram below of a layer 3 switch in action. We can see that there are two IP addresses, that is this one and this one. You can see here these are the two IP addresses, and this is VLAN 1, VLAN 2. This is the another department and this is the sales department. So दो डिपार्टमेंट है, एक सेल्स है एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, और अगर कुछ भी डेटा सेंड करना है हमें अकाउंटिंग के लिए, वो डेटा स्विचेस के थ्रू VLAN 2 पर ही जाएगा, क्योंकि जो हमारा स्विच है वो अपने पोर्ट पे कौन-कौन सी केबल्स लगी हुई हैं उनके उन्हें एक टेबल में याद रखता है। मान लीजिए स्विच के अंदर इस स्विच के अंदर एक टेबल है जहाँ पर VLAN 2 है, जो उसके अंदर ये डिवाइसेस हैं 3 और उन्हें लेबल किया गया है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो कोई भी डेटा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए आएगा तो वो स्विच के थ्रू इसी तरफ आएगा, क्योंकि switch is a smarter device and same as this part. In the context of this diagram above, the sales department and accounting department will be able to access the internet but not able to communicate with each other, although they are connected to the same switch. तो इसमें एक और चीज़ है जो कि ध्यान में रखने वाली है कि ये दोनों डिवाइसेस हैं जो हैं वो एक दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, और यही चीज़ हमें नाउ लेट्स आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस. What is the verb for the action that a router does? That is routing. What are the two different layers of switches? Separate these by a comma, that is layer, या यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, layer 2 and layer 3. Now let's jump to our task 6, that is practical network simulator. And as you all know that we love practicals. So let's click on the view site button. But let's read it first what we have to do in this task. Deploy the static site attached to this task and experiment with the network simulator. The simulator will break down each step a packet needs to take to get from point A to point B. Try sending a TCP packet from computer 1 to computer 3 to reveal a flag. तो हमें क्या करना है? We have to send a TCP packet from computer 1 to computer 3 so that we can get a flag, and then we have to put that flag in this box. Now let's click on view site button. Let me zoom out a little bit and let me move my face so that you can see it clearly what I'm doing on the screen. Now what we have to do is we have to send a TCP packet from computer 1 to computer 3. No, from computer 1. So we have to select computer 1 here to computer 3, and the type of the packet is TCP. Let's send an obvious message to all of you. Please subscribe.
Let me click on the send packet button and you can see, and in the network log you can see all the logs that we are going to discuss in a bit. Let's wait for the simulation to be done completely. Just wait. Okay, so here we have our flag. Let's copy this and let's wait. We have to go through our network logs. तो सबसे पहले जब हमने कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 की तरफ एक टीसीपी पैकेट भेजा एंड बहुत ही एक अच्छा मैसेज भेजा हमने कि हमें सब्सक्राइब कीजिए, तो क्या हुआ जब मैंने सेंड पैकेट के ऊपर क्लिक किया। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारे नेटवर्क लॉग्स के थ्रू हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग टीसीपी आईपी हैंडशेक बिटवीन कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 3। तो ये जो कंप्यूटर 1 है और कंप्यूटर 3 है, इसके बीच में सबसे पहले हैंडशेक की जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होती है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि टीसीपी हैंडशेक कैसे होता है। तो कैसे होता है वो हैंडशेक स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, सेंडिंग सिन पैकेट फ्रॉम कंप्यूटर 1 टू कंप्यूटर 2। तो अगर आपको पता होगा या आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि जो टीसीपी हैंडशेक है उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, जो कि है सिन, सिनैक एंड एक्। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कंप्यूटर 1 है, वो कंप्यूटर 3 को डेटा सेंड कर रहा है, मतलब एक टीसीपी पैकेट सेंड कर रहा है और उस टीसीपी पैकेट के अंदर लिखा हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब। उसके बाद क्या होता है, लेट्स व्यू आवर नेटवर्क लॉग्स। राउटिंग का मतलब क्या है कि कंप्यूटर 1 सेज कंप्यूटर 3 इज़ नॉट ऑन माय लोकल नेटवर्क, सेंडिंग टू गेटवे राउटर। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि नेटवर्क कैसे बन रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखें, ये एक राउटर है और ये एक स्विच है एंड दिस इज़ कंप्यूटर 3। तो ये एक अलग नेटवर्क बन रहा है हमारा और ये एक अलग नेटवर्क बन रहा है जो कि एक राउटर के साथ कनेक्ट है। सो दीज आर टू सेपरेटेड नेटवर्क्स। नाउ लेट्स गो बैक। अब क्या होता है, एक आरप रिक्वेस्ट सेंड होती है। जो आरप रिक्वेस्ट होती है ये होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जो ये प्रोटोकॉल होता है, ये बेसिकली नेटवर्क के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस हैं उनको फाइंड करता है। तो आरप रिक्वेस्ट जाती है कि हु हैज़ राउटर टेल कंप्यूटर 1। जो रिक्वेस्ट है वो ये जाती है कि राउटर कौन है। तो जब ये पैकेट यहाँ पर मूव कर रहा था ऐसे-ऐसे करके, जो आपने देखा पैकेट मूव कर रहा था, तो यहाँ से राउटर की तरफ से एक मैसेज वापस सेंड होता है, क्योंकि जो एआरपी है वो डिवाइसेस को मैप करता है नेटवर्क के ऊपर। तो क्या जाता है, राउटर एक मैसेज भेजता है कि हे कंप्यूटर 1 आई एम द राउटर, क्योंकि वो जो मैसेज है आर्प के थ्रू ब्रॉडकास्ट हुआ था पूरे नेटवर्क के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, हु हैज़ कंप्यूटर 3 टेल राउटर। तो ये बोल रहा है कि कंप्यूटर 3 कहाँ है? एक तरह से ये कंप्यूटर 3 को ढूँढ रहा है। तो कंप्यूटर 3 की तरफ से एक रिक्वेस्ट जाती है कि हे राउटर आई एम कंप्यूटर 3। ये इसलिए जाती है क्योंकि जो आर्प है, आर्प के थ्रू जो ब्रॉडकास्ट होता है मैसेज वो पूरे नेटवर्क के ऊपर होता है। मतलब ये दोनों नेटवर्क के ऊपर जो आर्प पैकेट है, वो इस पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर गया था, जब हमने सेंड पैकेट के ऊपर क्लिक किया था। उसके बाद अब राउटर को पता चल गया है कि कंप्यूटर 3 यहाँ है और कंप्यूटर 1 यहाँ है। तो जो हैंडशेक की जो हमारी प्रोसेस थी वो फिर से यहाँ से कंटिन्यू होती है। तो हैंडशेक कंप्यूटर 3 रिसीव सिन पैकेट फ्रॉम कंप्यूटर 1 सेंडिंग सिनैक पैकेट टू कंप्यूटर 1। जो सबसे पहले सिन पैकेट जो यहाँ पर भेजा गया था, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है पैकेट, ये सिन पैकेट जो है कंप्यूटर 1 से भेजा गया था कंप्यूटर 3 की तरफ। लेकिन जो आर्प है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसने राउटर सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं नेटवर्क के ऊपर। तो वो सिन पैकेट जो है वो कंप्यूटर 3 ने सक्सेसफुली रिसीव किया और एक्नॉलेज किया कि यस,
आई हैव रिसीव्ड योर सिन पैकेट, एंड एक सिन एक पैकेट वापस सेंड किया कंप्यूटर वन की तरफ। तो वो पैकेट जो है कंप्यूटर वन ने रिसीव किया और एक्नॉलेज भी किया कि हाँ, मुझे आपका सिनैक पैकेट मिल चुका है। उसके बाद जो है डेटा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होता है। नाउ कंप्यूटर 3 रिसीव्ड एक्नॉलेज पैकेट फ्रॉम कंप्यूटर 1, हैंडशेक कंप्लीट। यहाँ पे हमारा हैंडशेक कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिन, सिनैक एंड एक, इन 3 स्टेप के बाद हैंडशेक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेंडिंग टीसीपी पैकेट मतलब डेटा सेंड होता है। तो जो भी हमारा पैकेट था, टीसीपी की पैकेट जिसके अंदर हमने मैसेज लिखा था प्लीज़ सब्सक्राइब, तो वो मैसेज कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 की तरफ सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। और उसके बाद कंप्यूटर 3 रिसीव टीसीपी पैकेट फ्रॉम कंप्यूटर 1 सेंडिंग एक्नॉलेज पैकेट टू कंप्यूटर 1, और इसी के साथ हमारा ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और थ्री वे हैंडशेक के थ्रू हमारा जो डेटा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था हमारा प्लीज़ सब्सक्राइब, वो कंप्यूटर 3 को रिसीव होता है और कंप्यूटर 3 हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ लेट्स put here our flag, click on check button. How many handshake entries are there in the network log? तो नेटवर्क लॉग के अंदर हमारी हैंडशेक एंट्रीज कितनी थी? लेट्स चेक दिस अगेन by sending a TCP packet from computer 1 to computer 3, and this packet कितनी है? Let's wait to let's wait for the handshake to be complete. So 1, 2, 3, 4, 5. These are 5 entries. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और चैप्टर के साथ हमारा नेटवर्किंग का जो मॉड्यूल था वो कंप्लीट होता हुआ। एंड आई होप यू enjoyed a lot. This module was very interesting. Now in the upcoming video we are going to go further to our third module. Mm, let's go to our roadmap first, pre-security, and now we are going to learn how the web works, and that will eventually lead us to our hacking side. And these are some of the things that we are going to come across, and I'm going to reset all the progress that mm, that I made previously so that we can do it freshly. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय, स्टे सेफ।